watching the post-match analysis on Game On Air. The name happens to be Shahzad Hasan Khan. With me, very lucky to have been joined by Miss Cass Naidu. Double-headed today. One ends in an upset and the other one obviously ends in an upset as well for us. Cass, how do you feel about today? Oh, I really wish that we had a full game in the second half, because I so enjoyed how the fireworks were going off in Adelaide, and it wasn't off the bat of India. Unfortunately, the rain came, it was curtailed, but good action today, really good action. Yeah, I think everybody enjoyed. I mean, as a cricketing fan or as a cricket fan, everybody thoroughly did enjoy, how things were in Adelaide Oval today. Earlier, obviously, Netherlands taking it away from Zimbabwe. Zimbabwe were not able to kind of pitch in that pass score. We will certainly come back to that point as well. Well, let's talk about India versus Bangladesh in the first place. Let's take a good look at the match summary. I mean, obviously, the DLS got into the play, but, unfortunately, for Bangladesh, if the rain continued, they might have won. That's something, because in 7 overs they had 66 runs and without a loss of a wicket. That's when I actually came across Rashid Latif's tweet, which mentioned that if they are above 48, they would have won anyways. But then obviously I think that God did favor India today. Well, I think the big chat on Twitter is should they have gone back onto the field? It was very wet outfield. Lytton Das, of course, slipped and then was run out. But let's recap a match summary. India, of course, batting first, 184 for 6. A return to form for KL Rahul, and he'll be delighted with that. And another Player of the Match award for Virat Kohli. In reply, Lytton Das was absolutely sensational, 60 from 27. But losing 4 for 9 in 11 balls really just broke the back of the chase for Bangladesh. India in the end really sneaking over the line by 5 runs via the Duckworth-Lewis-Stern method. So they're already in semi-final mode, you would say, India, looking pretty at the top of the standings. I mean, obviously, there's no harm in saying that, because they totally deserve it. That's the kind of game they have brought to the ICC T20 World Cup, and even looking at the other group, I think New Zealand have done that too. I think perfect matchups. But congratulations to Virat Kohli. He becomes the top scorer till now in all the T20 International World Cups with 1,065 runs, taking over Mehela Jayawardene back in 2014, set a record. Virat, I mean, obviously you're an amazing gentleman, and the way that you have transformed into the player you are today, congratulations to you and for all of those fans of Virat Kohli, because cricket is beyond boundaries for me. I mean, that's how it is. But without any further ado, let's see what our experts have to say, Cass. So first up, ladies and gentlemen, very lucky to have been joined by somebody all the way from South Africa, happens to be a former cricketer, a current coach. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lance Klusener. Goeiemiddag. Goeiemiddag. How are you, sir? How are you? I'm tremendous, thank you. Thank you very much for joining us. Wonderful to have you alongside him. Ladies and gentlemen, we're very lucky to have been joined by somebody who always wants in-depth analysis, but with correct facts. And, that's something which people have been appreciating all over the globe while he was playing, one of the best wicket keepers, former skipper for Pakistan. Ladies and gentlemen, he is Mr. Rashid Latif. Assalamu alaikum, Rashid bhai. Walaikum assalam. Sham bakhair. Sham bakhair. Kaise aap theek hai? Yeah, theek hu. Zabardast. Last but not the least, ladies and gentlemen, one of those amazing all-rounders Pakistan has produced, happens to be a coach as of now as well. Most of the times he has been talking about England being his favorite team, but now he's gradually moved on towards New Zealand. So because they top the table, I think people can certainly have their inclination towards those teams as well. Ladies and gentlemen, he is Mr. Azhar Mahmood. Azhar bhai, assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm very good. Thank you very much for joining us. मैं बार-बार टीमें change नहीं करता. समझ आए आप ये? All right, we will come back to that point. We will talk about the power play and the scores, we have been anticipating. But first things first, I think let's move on to the points table and let's see. Because अभी भी जितने भी लोग जो बाहर हमें देख रहे होंगे वो ये सोचेंगे कि क्या पाकिस्तान का अब भी कोई चांस है, क्योंकि राशिद भाई जहाँ पे भी जा रहे हो लोग मेरे से भी यही सवाल पूछ रहे हैं, एक्सरसाइज करने जाते हो, खाना खाने जाते हो, कि पाकिस्तान का कोई चांस है, जरा पॉइंट्स टेबल के ऊपर पाकिस्तान का चांस उनको बताया नहीं आपने कि क्वालिफाई ना करने का है अगले वर्ल्ड कप का चांस, ये भी चांस। यस यस जी, उनको रियलिटी बताएं उनको। अच्छा, कि हो सकता है कि अगले वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई ना कर रहे हो। इंडिया नेट रन रेट वैसे ऊपर नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें 16 ओवर काउंट होंगे, जो 150 रन जो जब बारिश के बाद जो आपका डीआरएस का, उसको डीआरएस बोल रहा हूँ, डीएल का मेथड होता है, उसके ऊपर जो रन रह जाते हैं वो काउंट होते हैं। तो 150 16 ओवर में काउंट हुए होंगे, पूरे 184 नहीं होंगे जितने भी रन किए। साउथ अफ्रीका
चांस है, कल पाकिस्तान से मैच खेल रहा है और क्या चांस है? ये कल सुबह बात करेंगे। बांग्लादेश टफ, आज का मैच बस अपनी गलती थी, ये पहली दफा नहीं हारे ऐसे, इंडिया के खिलाफ 2-3 दफा जीते हुए मैच ये हारे, तो आज थोड़ा बहुत कैप्टनसी के ऊपर भी बात करेंगे कि कैप्टन ने 12वें ओवर में गलत शॉट मारी, रॉन्ग वे, जहाँ पे 4 फील्डर लिए हैं वहीं पे मारे जा रहे हैं वो, तो उसी ओवर में 2 आउट हुए, आफिफ भी उसी में आउट हुए, शकीब भी उसी में आउट हुए, वो इनके लिए टर्निंग पॉइंट था। एग्जैक्टली, 9वें से लेके 13वें ओवर तक उन्होंने 5 विकेटें गंवाई। मैं जरा अजहर भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। अजहर भाई, सबसे पहले तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ऑब्वियसली उनका टॉप ऑर्डर बड़ा अमेजिंग है। अगर किसी दिन केएल राहुल नहीं परफॉर्म करा तो हम देखते हैं रोहित शर्मा परफॉर्म करेगा, रोहित शर्मा नहीं करा तो विराट कोहली, तो इस किस्म के परफॉर्मर बन चुके हैं कि ऑलमोस्ट एवरी गेम इज गोइंग टू बी आउट देयर एंड ही विल प्ले फॉर हिज टीम। केएल राहुल के हवाले से बात करना चाहता हूँ क्योंकि उनके ऊपर तनकीद भी हुई पहले। क्या लगता है आपको, डू यू थिंक दैट he played a wonderful innings today and that's something which actually drove them towards home? किसने तनकीद की? आज मैं हफीज बनूंगा थोड़ा सा। ठीक है। नहीं, केएल राहुल, अगर आप इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट देयर टेक्निक, देयर एबिलिटी टू प्ले शॉट्स एंड एवरीथिंग, लाइक उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट और पोटेंशियल है। और केएल राहुल जो है ना, वो क्लास एक प्लेयर है, बड़ा अच्छा खेलता है, ईजी ऑन आई, इस तरह का प्लेयर है कि वो गेम चेंज कर सकता है। और यही बात है कि जा रहे हो खुद अपने ओवर जो है ना, वो 13वां या अलमन 14वां ओवर में अपना स्पेल ख़त्म कर दिया, ठीक है, एंड देन 18वां ओवर फिज कर रहा है, ठीक है। आपने 2 ओवर जो है यंग बॉलर्स को दे दिए। आप अगर थोड़ा सा आप रियलाइज करो ना कि कहाँ पे मुश्किल हो रही है, पावर प्ले में कोई भी बंदा बॉलिंग कर रहा है तो मुश्किल हो रही है, तो वहां आपने अपने जो बेस्ट बॉलर्स हैं उनको लेटर हाफ के लिए यूज करना है। ये जब हम बात करते हैं स्मार्ट कैप्टनसी की बात करते हैं, तो आपके जो बेस्ट बॉलर है उन्हें, क्योंकि आसान है ना, नया बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, बैट्समैनों को मुश्किल हो रही है, तो यू कैन यूज योर बेस्ट बॉलर आफ्टर दैट टाइम। सो ही यूज हिज बेस्ट बॉलर 4 over up front and left 2 overs for the young guys. I can't get my head around. So what he said, Lance, which was interesting, after the match, he said he used Taskin up front. He was obviously economical, but he was trying to get into that top order. Is that something that, had it worked out, we would have said, oh, that was a good move? But like Azza said, was it an opportunity to hold him back a bit for those death overs? I think there was, but it is quite tempting, certainly on that surface there, where the seamers have dominated the first and the second game, really. To use him for an extra over or two to get that breakthrough, because that Indian top order has been playing fantastically well. I think those top 4 batters have all got a score now over 50. So that's a worrying sign for people that still need to play them. But I guess with your top bowler, with a new ball, you kind of fancy yourself. You can just get 1 wicket. It is quite tempting to fall into that trap. And again, yeah, you're probably right. If they'd got an extra wicket, we might have said, oh, great captaincy, No, it's not just, okay, you bowled Taskin 4 overs, that's fine. Okay, you're going to take a chance, that's fine. He himself finishes over on the 13th over, it was last over, he finishes over at that time, and then he bowled Fizz, the 17th over, so like 19th and 20th over, the younger guys were bowling. That's my question is, okay, you want to take the wickets, that's fine, fair enough. But I'm saying, looking at this World Cup, easy time for the bowler to bowl up front, okay? Yeah. So you got 2 young guys, you can use them in the middle and get the best bowler towards the end where the firepower come into play. So I think this is the point you need to understand, because for younger guys, putting them in the deep end is a tough one. Yeah, it's a good point, because I think throughout the World Cup it's shown that those last 5 overs is the time to score runs. And like Fizz, we saw him, throughout the IPL, and like his record is phenomenal when he bowls the last over. So he got more experience. So you left with 2 younger guys to bowl. Exactly. राशिद भाई, इसमें थोड़ी मजबूरी हो गई थी इनकी बॉलिंग करने की, क्योंकि 6 ओवर में 37 रन जैसे दिए इन्होंने बांग्लादेश ने, लेकिन उसके जो आगे के 3 ओवर है 44 रन बने, 10 ओवर 24 रन एंड 10 ओवर्स, तो 10 रन, तो 44 जो बने। शरफुल आज खेले तो मैं सरकार की जगह, वो एक्सपेंसिव हुए, 20 उन्होंने दिए, 4 एक्स्ट्रास के हुए, तो उसके बाद उनके पास चांस नहीं था कि मेन बॉलर को वापस लेके आने का। वहाँ पे मेन बॉलर वापस आए, ये एक इनकी मजबूरी बन गई, 4th बाय 4th आए, वरना ये खुद अपने ओवर आखिर में रखते हैं ये।
लेकिन अगर कैप्टनसी की बात करते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन विराट उसके ऊपर जाता है, रोहित की तरफ जाता है। ये पर्थ नहीं था, बिल्कुल ये पर्थ के माइंड सेट से उन्होंने 6 ओवर करवाए जिसमें 60 रन हुए। यहाँ स्विंग नहीं मिली, यहाँ पे लेंथ आपको चेंज करनी थी। तो यहाँ पे आपका स्पिनर आना चाहिए था, क्योंकि अक्षर पटेल जो था दायरे में अच्छी बॉल करता है। बिल्कुल, जब लिटन दास मार रहा है तो आपने तो ट्राई क्यों नहीं की, पेस ऑफ क्यों नहीं की? तो क्वेश्चन दोनों की कैप्टनसी में है। शुरू के 10 ओवर्स में दोनों ने खराब कैप्टनसी की, जिसकी वजह से दोनों के हाथ से मैच निकला। एग्जैक्टली, जिसकी वजह से दोनों के हाथ से मैच निकला। मैं जरा सर एक और तरफ भी एक और डिस्कशन करना चाहता हूँ उसके ऊपर। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट ऑन ट्विटर, क्योंकि आज अंपायर जो थे वो ग्राउंड के अंदर अंपायर जो थे वो सर 2 और 3 4 थे। उसकी वजह यह है कि मैं जरा वो विराट कोहली की डिमांड करते हैं शुरू हो जाती है और ना फिर उसके बाद रिप्लेस दिखाते हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जरा सबको बात करनी चाहिए, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं। पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने नो बॉल डिमांड की, इट वाज गिवन। आपने उसको आगे बता दिया कि यार वो जब तक बॉल बाउंड्री के पास गई। मैं पहले वो क्लिप दिखाना चाहता हूं कि प्लेयर की डिमांड करने के ऊपर नो बॉल क्यों दी जा रही है। आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज सो अनफेयर। और आप मुझे ये भी बता दें क्या ये नो बॉल है? देखो ये होता है कि इससे पूरा ओवर देखना पड़ेगा जी। दिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल दिखा देंगे, दिखा दें। देखिए अगर हमारे पास पूरा ओवर हो तो जरा प्लीज कोशिश करेंगे वो भी दिखा दे। ब्रेक के बाद सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। होता है कि ये सेकंड बॉल होगी जी, ये फर्स्ट बॉल नहीं है, सेकंड नो बॉल अबव द शोल्डर होगी। तो हम पूरा ओवर देखेंगे पहले कितने ऊपर से गई है। तो अगर इसका रिप्ले दिखा के रोक सकें आप यहाँ पे जी, तो फिर हम खुद ही एविडेंस है हमारे पास, ऐसा नहीं एविडेंस नहीं है। तो अगर एविडेंस है तो फिर हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। अगर ये देखें ये आ रही है ऊपर था, ये देखें ऊपर शोल्डर के ऊपर है ना, ये तो नो बॉल है। सही है। इससे पहले लेकिन अब बजाय इसके कि प्लेयर डिमांड करे अंपायर को दे देनी चाहिए। कर सकता है, अपील कर सकता है, अपील तो कर सकता है। आई थिंक अलाउ नहीं है कि अब बैट्समैन ये काम करे कि वो अंपायर को अगर अलाउ नहीं होगा तो फाइन होगा इसके ऊपर। हाँ वो उसके ऊपर तो बने फाइन होगा। फिर तो 2 दफा फाइन होना चाहिए। अपील कर सकता है मेरे ख्याल से। वो उसने बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ, उसने सिर्फ इशारा किया कि नो बॉल है। नहीं वो राशिद भाई यही होता है ना कि जिस वक्त आप एज अ बॉलर अगर आप जस्टर करते हो, ठीक है, अगर आपने अपील किया, अंपायर ने आउट नहीं दिया, आपने यूं किया, सडनली द बॉलर गेट्स फाइन। नहीं फिर तो फाइन होना चाहिए। फिर फाइन ये चीज है कि आपने पिछले मैच में भी ये कहा और इस मैच में भी कहा, चलो ठीक है पाकिस्तान वाला मैच क्रूशल मैच था, हीट ऑफ द मोमेंट, आपने कहा कि जी वो हो गया आपसे, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन ये वाला जो है उसके ऊपर जो है ना फाइन होना चाहिए। जो आईसीसी के रूल हैं, क्योंकि अभी आप जेस्चर नहीं कर सकते। अभी काउंटी क्रिकेट में भी ये था कि आप आउट भी हो गए हैं ना, गलत भी आउट है, आप कुछ भी है, लेकिन आप सर भी नहीं हिला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त आईसीसी का क्या रूल है, कि इसमें क्या रूल होता है, लेकिन यू कांट डू दैट। आई थिंक इट्स राइट नाउ यू कैन यू डू दैट? कैन द बेटर डिमांड? I think batsmen have been doing that for many years. It's a natural thing. Yeah. But I think you just need to be careful. But it is something that batsmen have been doing for a long time. So I think you just need to be careful. I think you can whisper in the umpire's ear possibly. It's always hard for the bowler. Sorry, you know, like when bowlers do just I got a wicket and I put my finger there, and you suddenly get. Match referee will call you and fine you. Yeah. But you know, like batsmen get away. It's a batsman game. It's a batsman game. I think also perhaps it's Kohli's ability to get umpires to see it his way, the way he does it, his entire body language, and then what that also does, it disrupts the opposition team. So he achieves 2 things: 1, gets the umpire on his side; 2, rattles the opposition. Yeah, I mean, and he carries more weight than other people or other batsmen, and umpires feel, oh well, it's Kohli that's asking, or you know, it's he must be right. It's not always the case, you know, but he's done it twice now. Yeah, and you know, I think that this one's for Cass, you know, because Cass, you know, we certainly ask questions. We're going to ask you this one as well. Do you think that, you know, for all these umpires out there who still will be available for IPL, you know, kind of take it that way too as well? And you know, obviously I'm going to agree with Lance where Lance said that yes, you know, it's the weightage of the player too as well, and it's Kohli asking, so the umpires certainly do not want to go and make that big of a mistake. Do you think they still have it back of their minds that okay, you know what, we're still up for IPL, you know? So it's a hard one. I mean, it's easy to say yes because it's an emotional thing, and you say, well, the umpires are trying to protect themselves. But you've got to say that this is a top quality umpire. True. Right? And he has been in these kind of situations. He's umpired in India where decisions have gone against Indian players, at which he's been in the thick of things. But I agree with Lance that Kohli needs to be circumspect with his behavior, because come in a knockout game, something could
totally rattle him. True. He got so rattled in South Africa during the test series that because of his behavior, they lost that second test in Cape Town. So it could very well backfire on him. He's in the form of his life after being in the worst dip of his career. True. He's got the most player of the match wins for an Indian player at a T20 World Cup. If I were him, I would gently ask without throwing his hands up in the air. Yeah, I also think umpires don't call those no balls immediately. Okay. You know, it takes a couple of seconds. So You've almost got to there's no give them. saying that they wouldn't have called that no ball anyway. True. But because Kohli did it immediately, it appears that That's a good he's point. influenced it. But Exactly. sometimes Rashid it bhai, takes 2 or it's- 3 seconds. Yeah, and that's what how I would want to connect with Rashid Bhai, because when we spoke about the no ball against Pakistan, Rashid Bhai said that it's the leg umpire who's actually going to indicate to the Yes. umpire, and then the umpire is going to give it away when he's correct. on camera. So you're right on that. Ji Rashid तो Bhai. इसमें भी सेम है, इसमें भी वो राइट अवे नहीं देगा, स्क्वायर लेग एम्पायर देखेगा, मैनेज करेगा, देख के मेजर करके फिर उसको करेगा. तो कोहली का ये अगर तो लॉस अभी भी स्टिल है, जैसे अजहर ने कहा, तो फाइन होना चाहिए. कभी कभार ऐसा होता है एम्पायर भूल जाता है कि सेकंड थी या नहीं थी, और कभी कभार होता है कि 4 फील्डर अगर सर्कल के अंदर हैं, वो एक निकल गया, 3 है, तो एम्पायर कभी कभार भूल जाते हैं. तो उसके फौरन बाद बॉल होने के बाद कभी कभार याद कराया जाता है, फिर उसके बाद में नो बॉल दी जाती है. तो इसमें लेकिन ये कि जो आप लोगों की बात कर रहे हैं, जो टीवी ने दिखाया कि इमीडिएटली उसने इशारा किया है, वो रॉन्ग है. लेकिन फिर भी हमें रूल्स देखने पड़ेंगे कि आज, क्योंकि हम लोग तो ये तो नए, हम तो पुराने ज़माने के लोग हैं, तो उसमें देखना पड़ेगा रूल में क्या है. नो आईसीसी के रूल की जो बात आपने की ना अभी रिसेंटली पे 100 में हम कर रहे थे, वी पार्ट ऑफ 100, वी पार्ट ऑफ काउंटी चैंपियनशिप, वहाँ पे नॉट अलाउड. T20 में वो नहीं है. अब इसका मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो मुझे रूल्स का पता नहीं है क्या है इसमें क्या है. लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि नो जेस्चर, अगर आप आउट भी हो गए, गलत आउट है, यू कांट डू एनी जेस्चर और आस्किंग अंपायर व्हाट वाज दैट, सो यू गेट banned straight away. So no matter what happens, you know, it's just like that you got a beating from your mom and you cannot still complain about it as well. Yeah, so Well, you can by because tidying the house first, and then you can have a chat. But you can't, you can't just argue about it. Umpire is the boss around Yeah. at the ground, so his decision I is mean, final. when Virat is on crease, it certainly does not look like that umpire's the boss. That was the question. Yeah. I think it doesn't matter though, because in the end he backed it up with the runs, doesn't he? True. And the way he shifted through the gears today, we spoke about it in the build-up show. He comes in there, he starts slowly. तो इनके खेलने के स्टाइल में भी फर्क है. और उसकी केएल राहुल की भी बात कर लीजिए. जी कल. केएल राहुल को आज जो देखा पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप में, मैं एक चीज़ ज़रूर नोट कर रहा हूँ इनकी, जहाँ 140 प्लस की बॉल होती है, बाउंस होता है ना, उनको इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ये बैकफुट पे रहते हैं, कट मारते हैं या पुल मारते हैं. वहाँ इनको ना रूम मिला कहीं पे भी, और ना ही उनको कंफर्टेबल महसूस हुआ कहीं पे भी. ये इनके मतलब की टीम भी थी, ये इनके मतलब की पिच भी थी. 135 पे सारे चौके मारे, छक्के चौके सारे 135 पे मारे. जहाँ 145 आती है, 143 आती है, तो केएल को प्रॉब्लम हो रही है. तो इसका मतलब नहीं है कि ये इससे निकल गए, अपने जो शैल से निकल गए. ये पिच ने इनको इस काबिल बनाया है कि आज की प्रायोरिटी है. लेकिन है डेंजरस प्लेयर. उसमें 145 वाले प्लस बॉलर जो होते हैं वो कम है. वहाँ से अगर ये निकल जाए तो पावर प्ले के बाद जो बैटिंग है ना इनकी, वो बहुत ही डेंजरस है, जो कि नज़र आता है. स्ट्राइक रेट 150 प्लस पे चले जाते हैं, उससे भी आगे चले जाते हैं तो डेंजरस प्लेयर. लेकिन आज इनको पिच ने और पेस ने बहुत सहारा दिया. I think